come back to Bhubaneswar is a real blessing. बैक टू बैक दुईटी विश्वकप मैच खेल ओडिशा एवं अंतर्जातीय स्तर में प्रसिद्धि लाभ कर सारी बर्तमान जदि आप देखिए तेज क्रिकेट पर हॉकीर क्रेज युवपीढ़ी भितर यथेष्ट मात्रा वृद्धि पाई किंतु अन्य गेम कथा जिते आसूँ विशेषकर टेनिस कथा आसूँ से क्षेत्र में कहीं लोक मान युवपीढ़ी से क्रीड़ा प्रति विशेष मात्रा आग्रह वृद्धि पाऊनी कि युवपीढ़ी मैंने से आग्रह देवा चाहूना से नहीं सीधासल कथा हाँ कारण आम सहित रही 1996 ओलंपिक रे टेनिस रे जीति एवं ब्रोंज मेडल इंडिया पई आनी आम पाखे रही सीधासलख से ही जड़े प्लेयर रही लियांडर पेस सीधासलख प्रतिक्रिया नेबा बहुत बहुत स्वागत है ओडिशा में। 1996 के बाद वही क्वेश्चन सारी मीडिया आपसे पूछते हैं, आज मैं भी दोबारा वही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। 1996 के बाद क्यों इंडिया दोबारा मेडल नहीं ला पा रहा है ओलंपिक्स में? किस वजह से? प्लेयर वीक हैं या फिर उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा है? 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक्स जो था, इंडिया सबसे बेस्ट किए हैं। इंडिया का जो ओलंपिक्स का जो हिस्ट्री है, हम लोग 7 मेडल जीते हैं टोक्यो में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उस सोच में हाँ, जो जिस तरह से आप सवाल पूछ रहे हैं कि टेनिस में, आई थिंक वील हैव टू हैव अ लिटिल मोर पेशेंस टू create more medals in the Olympics. I feel that if you look at the Khelo India movement, it did a great job for sport in the country. If you look at someone like Kiran Rijiju when he was the sports minister, he did a wonderful job supporting the female athletes and the male athletes. So they did a wonderful job there. Also sitting here in Bhubaneswar, if you look at our Chief Minister, Mr. Patnaik, Mr. Naveen Patnaik, in my humble opinion, is one of the best Chief Ministers in the whole country. The way that him and his team, Vinil Krishna, Dilip Thirki, a very dear friend of mine, have conducted and run the Hockey World Cup is just fantastic. It's a showcase to show how Indian sport is growing so much. I think that when you look at sport in the country, it is the best way to reach out to the youth. We've approximately got 745 million kids under the age of 26. We're the youngest country in the world. So then if you look at sport, which unites the people, which unites the youth, brings them out together, gets them to play, gets them to learn leadership, get them to learn teamwork, get them to learn so many wonderful things through sport, I think it's the best vehicle to get the youth into. That being said, to come back to your specific question, I think sport in our country is just growing leaps and bounds, and it's just going to get better. ओडिशा तो अभी स्पोर्ट्स हब है, पर अगर देखा जाए तो हॉकी एंड क्रिकेट के बाद लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट टेनिस में नहीं होता है। ऑडियंस की बात कहें या फिर बच्चों के बारे में बात करें, क्योंकि जूनियर टेनिस के जूनियर में लोग अच्छे मेडल ला रहे हैं, पर अगर हम देखते हैं कंपैरेटिवली अदर स्पोर्ट्स के हिसाब से टेनिस में उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, या फिर क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? मेरे समझ में वो आपका सोच है, मगर जो नंबर्स जो कहते हैं देश में, tennis is growing really fast. The way I look at young girls coming out to play the game, the way I look at the youth coming out to play sport is just wonderful. Yes, when you look at sports like cricket, when you look at the IPL, it's the best league in the world. And when you look at the youth coming out to play, sport is just growing leaps and bounds. So I'm very positive about how sport in our country can be a vehicle to bring the youth out and unite them and play. And I think that in the next Olympics coming up, it's just one way up. ओडिशा इज द स्पोर्ट्स हब, तो आप क्या सोच रहे हैं ओडिशा में किस चीज़ की डेवलपमेंट की ज़रूरत है टेनिस को लेकर? देखा जाएंगे, बातचीत हो रहे हैं, और इसमें जो अकेडमीज़ जो है काफ़ी बढ़ चुके हैं इंडिया में. सो यू हैव गॉट सो मेनी cricket academies, football academies, shooting academies, badminton academies opened up. But I also feel that to the knowledge of how to nurture champions, the knowledge of how to live a quality life is what I can bring to the game. I've obviously played for 35 years. In our family, in the Paes family, we've got 2 generations of Olympic champions. And for me, my passion is to take my Baba's knowledge of his 60 years of sports education and spread that through the youth in the country. My dad over the last 50 years has trained 25 million students. I myself have done about 12 million students. So in that, to keep using sport as a vehicle to better the lives of young children is really my dream. It's about giving back to the society. It's about giving back to the young kids an opportunity just like our parents gave us. Thank you.
आपण देखुले आम सहित रही लियांडर पेस और जहाँ से सूचना दौले जे कंपैरेटिवली जदि कह क्रिकेट और हॉकी सहित टेनिस आदृति लाभ कला धीरे धीरे और टेनिस प्रति युवपीढ़ी मध्य आग्रह वृद्धि पाँच और जहाँ से कहते भविष्य में दरकार पड़े से कि ग्रोथ कर देश कि टेनिस प्रति अधिक लोक भर आग्रह सृष्टि हो से नहीं सीधा सड़क से कथा हेबे और से दिगरे युवपीढ़ी मानक अधिक आकर्षित करने जहाँ द्वारा यथासंभव कार्य करेंगे। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन अब्दुल अजीज सह हर्षा सतपथी, OTV।